Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ speaking ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ. It is just a practice that you can do it in the lockdown. Lockdown ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟਿਪਸ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਇਹ ਟਿਪਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ it is going to be a great success to you. See, speaking as you know is divided into three parts. Three parts ਦੇ ਵਿੱਚ speaking divide ਹੈ and I'm going to pick up part 1. One by one we'll be doing it. Part 1 speaking ਦੇ ਵਿੱਚ 30 seconds name, nationality, ID और ਤੁਹਾਡੀ general hometown, hobbies, family ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So they are considered to be the general questions. ਇਹ ਇੱਕ general questions ਹੈ. General questions ਦੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ lockdown ਤੋਂ ਬਾਅਦ I'm sure ਕਾਫੀ practice ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਗਈ ਹੋਏਗੀ. Practice ਨੂੰ improve ਕਰਨ ਲਈ start practicing with your friends, and if you have a book you have all the short question and answers with you. आप उनको पढ़ो और practice करो. Second, this interview part 1 will be roughly for 3 to 4 minutes or 4.5 minutes. 4 मिनट 5 सेकेंड या 4-5 मिनट तक ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट पार्ट होएगा. This first part is a warm up part ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ warm up ਕਰਨਗੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਗੇ. ਇਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਰਵਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ that what am I going to speak. So what I would advise you that in this time the best part is start reading short question and answers. Now these short questions are going to be with simple conversation about personal preferences or experiences. Anything they can ask you. कुछ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ. whatever is happening every day start narrating in English. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ट्रैफिक च की एक्सपीरियंस किया है, की देख रहे हो और इनू किस तरह ओवरकम कर सकते हो उहदे बारे बोलो. आजकल तो वैसे ट्रैफिक है नहीं. लॉकडाउन के बारे तुहानू की फील हो रहा है, व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है एंड व्हाट चेंजेस आर यू गोइंग टू मेक इन योर लाइफ. यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स और कोलीग्स. अगर कुछ भी नहीं है तो फ़ोन पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो. Then we shift to part 2. This is cue card. 3 to 4 minutes you have to be very vigilant कि आप क्या बोल रहे हो. बड़े ध्यान से आपको सुनना देखना पड़ेगा कि कौन से कार्ड्स आप पिक कर रहे हो. Cards are going to be from your daily life, but what I would suggest you is for the practice ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ suggest ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ cards ਲਓ related to past tense. Past tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ 'ਚ ਅਕਸਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. बच्चा अक्सर भूल जाता है कि whether I am going to speak about past or present. Pick up a card, like there's a card of party. एक कार्ड पिक करो and just make a track fan. उसका track fan बना लो, उसके ऊपर past tense लिख दो. Past tense when you will write it, make it a point that it goes to past tense. और past tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ कार्ड ਨੂੰ stop करो. Pointers ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ. बनाने तो बाद कार्ड ਨੂੰ stop करो. स्टॉप करके यही कार्ड रीड अलाउड करो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू द प्रैक्टिस. और यह प्रैक्टिस किस तरह होएगी, तुसी कार्ड नू जोर दी पढ़ रहे हो, रीड अलाउड कर रहे हो. एंड द थर्ड स्टेप, द लास्ट स्टेज ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी टेक आउट योर मोबाइल्स, उहदे ऊपर टाइमर लगाओ एंड देन रिकॉर्ड योर कार्ड्स. दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मैं स्टूडेंट्स नू कभी भी नहीं सजेस्ट करती, कभी भी नहीं कहती कि किसी शीशे के अगे खड़े होकर बोलो. स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी एनी ऑफ द हीरोज़. आपको अपनी शक्ल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. एग्जामिनर ने आपकी शक्ल नहीं देखनी, आपकी आवाज़ सुननी है. देन यू लिसन टू योर ओन वॉइस दैट व्हाट हैव यू स्पोकन एंड वेयर इज़ द मिस्टेक. कि गलती आप कहाँ पे कर रहे हो. जो गलतियाँ आप कर रहे हो उसको नोट डाउन कर लो. जस्ट नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव. I am telling you seriously, this practice is really going to help you when you come to the classes. जब आप classes में वापस आओगे, you will be fluent enough
to speak. Then we shift to the third part, that is a discussion part, how to practice the discussion part. More detailed discussion related to the topic. Now in this topic what is going to happen, there is going to be more detailed, that is going to handle the topic, whatever the topic is, the questions are going to be related to that. जो topic तुसी बोले है, ओदे ऊपर तोनु questions पूछेंगे. Now this is a part which you can't practice alone. Ask any of your friends, your siblings, your brother, sister, any of the seniors or a person who's got a good command in English, आप उसके साथ थोड़ी सी practice करो. And I think this will go very well. The best is going to be handle your grammar portion. अपना grammar portion handle करो and start with past tense. I think that this is going to be sufficient enough and this is going to be enough for you to practice. Then I'll be moving forward. How the band score goes. Band score चलता कैसे है? आपने बोला मैम मैंने practice तो कर ली, but इसके bands कैसे आएंगे? इसका band score कैसे लगेगा? मैंने 9 bands जितना बोला, band तो मेरे 5 आए हैं, वो bands 5 आएंगे अगर आपको उसकी division नहीं पता. जे ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं कि यदि categories किस तरह की हैं, तो 9 bands touch किस तरह होंगे. It is a channel that you have to cross. इस channel ਨੂੰ cross करना है to touch 9 band. 3 band, it will just is given for your confidence, appropriate expressions and even the way you sit in a proper position, having a proper eye contact. इन सब चीज़ों के 3 bands हैं. You have to fulfill this channel. Then the next thing that you have to keep it into mind is fluency and grammar go hand in hand for the speaking module. You need to be fluent with your answers along with the using correct grammar. Now how are you going to use a correct grammar unless and until you don't practice? Second, the word is fluency. Fluency word को दिमाग में रखो. Fluency means speaking without interruption. Speaking in a proper graph. Your speech should not be very fast. तेज़ बोलना fluency नहीं होती. Speed से, बहुत speed से बोलना fluency नहीं है. Fluency का मतलब है बिना किसी रुकावट के आप बोल रहे हो. आपको मालूम है कि मुझे बोलना क्या है and you are comfortable enough to speak on a single topic. जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसमें unnecessary speech breakers नहीं लगा रहे और आप उसको बोल रहे हो. Then another 3 bands, the approach of the answer includes the clarity with which you are able to justify the relevance of your answer. For this part, to score full marks, examples with the statements are must. कि अब आप 1 line में answer कर रहे हो, examiner को समझ में नहीं आ रहा. Yes, no, he doesn't have the margin to give you the score. Yes, no में वो आपकी grammar क्या check करेगा और आपकी approach कैसे check करेगा. उसके लिए आपको कोई ना कोई पर्सनल एग्जाम्पल देना है. जो चीज़ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ. ਹਾਊ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਯੂ ਆਰ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਰੈਕਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੂਐਂਸੀ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਸਕੋਰ. नाउ द बॉटम लाइन ऑफ दिस सेशन वॉज कि आपको पता चल जाए दैट वेयर एम आई स्टैंडिंग, कि मेरी स्टैंडिंग कहाँ पे है. And this portion is really going to help you out to deal that how you are going to take care of your grammatical errors. Past tense के ऊपर ध्यान दो पहले. In my next video, I'll be discussing out another tenses with you and I'll be taking a part of personal experiences and examples कि उनको deal कैसे करना है. I think till then you should be very healthy.